Assalamu alaikum and welcome to today's video on Islamic calligraphy. Islamic calligraphy is a unique art form that has been used to express the beauty of the Arabic language and the principles of Islam for over a millennium. Today, we will be exploring the history, techniques, and significance of Islamic calligraphy. अस्सलाम अलैकुम और इस्लामी खत्ताती पर आज की वीडियो में खुश आमदीद। इस्लामी खत्ताती एक मुनफरद फ़न है जिसे अरबी ज़बान की खूबसूरती और इस्लाम के उसूलों के इजहार के लिए 1000 साल से इस्तेमाल किया जा रहा है। आज हम इस्लामी खत्ताती की तारीख, तकनीक और अहमियत का जायज़ा लेंगे। The art of calligraphy in the Islamic world dates back to the 7th century when the Quran was revealed. The earliest form of Islamic calligraphy was known as the Kufic script, which was used to write the Quran and other religious texts. Over time, other scripts were developed, including Naskh, Thuluth, and Divani, each with its own unique characteristics. इस्लामी दुनिया में खत्ताती का फ़न 7वीं सदी का है, जब कुरान नाजिल हुआ था। इस्लामी खत्ताती की इब्तिदाई शक्ल कोफक रस्म अल-ख़त के नाम से जाना जाता था, जो कुरान और दीगर मजहबी मतवन को लिखने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। वक्त गुजरने के साथ साथ दीगर रस्म अल-ख़त तैयार किए गए, जिनमें नासिख, तेलूत और दीवानी शामिल हैं, हर एक अपनी मुनफरिद खुसूसियात के साथ। The tools and materials used in Islamic calligraphy include the reed pen, ink, and paper. The reed pen is made from a grass called kalam and is cut at an angle to produce a broad or narrow stroke. The ink is usually black and made from lampblack, water, and gum arabic. The paper used for calligraphy is usually handmade and can vary in texture and thickness. इस्लामी खत्ताती में इस्तेमाल होने वाले औजार और मवाद में सरकंडे कलम, सियाही और कागज़ शामिल हैं। सरकंडे का कलम नामी घास से बनाया जाता है और इसे एक जाविया से काटा जाता है ताकि एक चौड़ा रतन स्ट्रोक बनाया जा सके। सियाही आमतौर पर सियाह होती है और लैम्प ब्लैक, पानी और गुम अरबी से बनती है। खत्ताती के लिए इस्तेमाल होने वाला कागज़ आमतौर पर हाथ से बनाया जाता है और उसकी साख्त और मोटाई मुख्तलिफ हो सकती है। Islamic calligraphy also uses various techniques to create beautiful and intricate designs. One such technique is the use of harakat, or diacritical marks, which are used to indicate the correct pronunciation of Arabic words. Another technique is using tashkil, or vowel signs, which indicate the vowels in Arabic words. इस्लामी खत्ताती भी खूबसूरत और पेचीदा डिज़ाइन बनाने के लिए मुख्तलिफ तकनीकों का इस्तेमाल करती है। ऐसी ही एक तकनीक हरकत डाइक्रिटिकल मार्क्स का इस्तेमाल है, जो अरबी अल्फाज के सही तलफ़्फ़ुज़ की निशानदेही के लिए इस्तेमाल होते हैं। एक और तकनीक तश्कील व सर की अलामात का इस्तेमाल कर रही है, जो अरबी अल्फाज में सर की निशानदेही करती है। Islamic calligraphy has a deep spiritual significance in Islam. It is believed that calligraphy is a reflection of the divine word and that the beauty of the script enhances the meaning of the words it represents. Islamic calligraphy is also used to decorate mosques, books, and other Islamic art forms. It is considered a form of worship and is often used to express gratitude and praise to Allah. इस्लामी खत्ताती की इस्लाम में गहरी रूहानी अहमियत है। ये ख्याल किया जाता है कि खत्ताती खुदाई कलाम का अक्स है और रस्म अल-ख़त की खूबसूरती उन अल्फाज के मानी को बढ़ा देती है जिनकी वो नुमाइंदगी करती है। इस्लामी खत्ताती को मसाजिद, किताबों और दीगर इस्लामी फनपारों को सजाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसे इबादत की एक शक्ल समझा जाता है और इसे अक्सर अल्लाह का शुक्र अदा करने और तारीफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। In conclusion, Islamic calligraphy is a beautiful and meaningful art form that has been an integral part of Islamic culture for centuries. It reflects the beauty of the Arabic language and the principles of Islam, and its use in religious texts, mosques, and other Islamic art forms serves as a reminder of the importance of faith and devotion. We hope this video has provided you with a better understanding of Islamic calligraphy, its history, techniques, and significance. Thank you for watching. आखिर में, इस्लामी खत्ताती एक खूबसूरत और बामानी फ़न है जो सदियों से इस्लामी सकाफ़त का अटूट हिस्सा रहा है।
ये अरबी ज़बान की खूबसूरती और इस्लाम के उसूलों की अक्कासी करता है और मजहबी मतवन, मसाजिद और दीगर इस्लामी फनपारों में इसका इस्तेमाल ईमान और अक़ीदत की अहमियत की याद दहानी का काम करता है। हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो ने आपको इस्लामी खत्ताती, इसकी तारीख, तकनीक और अहमियत के बारे में बेहतर तौर पर समझा दिया है। देखने का शुक्रिया।